और मेरा हम- हमने आई थिंक पार्ट 1 किया था ए। ओके पार्ट ए किया था, पार्ट बी को कर लेते हैं. Okay, given that A, B, C and B, E, D are the straight lines, find the values of the unknown in each of the following figures. Okay, मेरा वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? जी। ओके गुड. अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ए बी सी. Given that A, B, C and okay, A, B, C and B, E, D are the straight line. Okay, good. अच्छा हमने अननोन्स वैल्यू को फाइंड करना है. लाइक इन दिस क्वेश्चन वी विल नीड टू फाइंड द सी वैल्यू. सो व्हाट वी विल नीड, व्हाट वी विल डू, यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू थिंक क्या करना होगा? Oh, we can make a line. Can I do it on the screen? I don't know यस how to see यस. it. Oh wait, you can't annotate on this. या यू कांट राइट. Um, you can make like the alternate angle of C of A E D, a line for that for the obtuse angle. Um, लाइक दिस. no, on A. ओके लाइक दिस. Yes. So that's alternate to C. So, no, wait, that's not alternate. The other way. No, never mind, that is alternate. या Okay, so that you can do 180 minus 22, 180 minus 22. and that will be C then, because alternate. ओके रानिया फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, शायद वहाँ से आपको थोड़ा हिंट्स मिल जाए. फर्स्ट पार्ट को देख लो. यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक? दिस इज ट्राइंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. और यहाँ पे आप वो एक पॉइंट भी यूज़ कर सकती हो. लाइक वो मैं थोड़ा सा आपके लिए दोबारा रिपीट कर लेता हूँ. वो पॉइंट क्या था कि Clear angle theorem. या कि दिस विल मेक 180, दिस एंगल विल कंप्लीट दिस 180 डिग्री. तो आपने इस एंगल को नहीं लेना. योर दिस 115 विल बी इक्वल टू दी समेशन ऑफ A and 90 degree. yes a plus 90 degree. So your a will be equal to 115 minus 90 which is equal to 25. Okay, आपका a एंगल 25 आ गया. Now you will need to find b. So what do you think क्या करना है यहाँ पे? इस तरह के जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने अल्टरनेट वो उस टॉपिक को जाने की बजाय आप ट्राइंगल्स को थोड़ा देख लिया करो. तो ट्राइंगल से आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाया करेगा. ओके, ट्राइंगल्स में फिर आपने देखना है कि अननोन एंगल कौन सा है. तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो उसके अकॉर्डिंगली कर लिया करो. अगर उससे नहीं होता तो फिर आप वो कर लिया करो. वो जो कंसेप्ट्स हैं, जो पैरेललोग्राम के जो कंसेप्ट्स हैं, अल्टरनेट एंगल, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो कंसेप्ट्स आप फिर अप्लाई कर लिया करो. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू कंसिडर ऑल द ट्राइंगल्स. ओके, यहाँ पे देख लो तो ए एंगल मेरे पास आ गया 25. आई विल नीड टू फाइंड बी. सो व्हाट डू यू थिंक? You told me another way too, but I think I understood it like B minus A equals 90 plus 32. ओके, बी माइनस ए. Oh wait, isn't it plus A? Yeah, this is plus a, b plus a. Okay, this angle plus this angle and this will make 180 degree. So you will not take this angle. Okay, अगर ये angle add कर लो इनके साथ तो this will make 180 degree. So you will not take this angle. So these two, summation of these two will give you this. Good. So your b will be equal to 90 plus 32 minus a which is 25. So your b will be equal to, आप सॉल्व कर लो. सो यू विल गेट दी आंसर. ओके, अच्छा
97 आएगा इससे। ओके अच्छा, या इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, लाइक इफ़ यू फाइंड दिस एंगल, ओके, अगर आप इस तरह कर लो कि ये एंगल फाइंड कर लो, दिस वन विच इज़ अननोन, सो योर अननोन प्लस 32 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 180। सो इससे आपके पास अननोन एंगल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एज वी नो दैट बी प्लस अननोन प्लस ए इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि ये कंप्लीट आपका 180 बना रहा है। सो योर बी प्लस अननोन एंगल आपके पास यहाँ से आ जाएगा, प्लस ए एंगल आपका 25 आ गया, दैट्स इक्वल टू 180। सो यहाँ से आपके पास बी एंगल आ जाएगा। गॉट इट? तो जो भी आपको इजी लगे, बट दिस इज़ ए लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ओके, तो इट डिपेंड ऑन यू, आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। सो ये मेथड अप्लाई कर लो, सो ये भी सही है। ओके अच्छा, अब पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। So, ये सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है, एंड यू विल नीड टू फाइंड द सी। इट इज मेकिंग एन एंगल, या दिस एंगल विल कंप्लीट द 180 डिग्री। ओके, सो इस एंगल को आपने नहीं लेना, योर सी विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस प्लस दिस अननोन एंगल। सो योर सी विल बी इक्वल टू u प्लस 22। नाउ आई विल नीड टू फाइंड u। जब मैं u फाइंड कर लूँगा, सो दैट्स वो यहाँ पे मैंने वैल्यू स्पॉट करने, सो दैट्स विल बी इक्वल टू सी एंगल, ओके, विच इज़ अननोन इन दिस क्वेश्चन। अब मुझे u फाइंड करना है, सो अब हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में देख लो, सो दिस एंगल इज द अननोन। लेट्स से दिस इज एंगल B. So we know that 89 plus 27 plus angle B is equal to 180. So your angle B will be equal to 180 minus 89 minus 27. इससे आपके पास 64 आ जाएगा। सो योर बी एंगल विल बी इक्वल टू 64। अब यहाँ पे देख लो, ये टोटल एंगल कितना है, दिस इज़ 180। सो योर 180 इज इक्वल टू बी प्लस यू। सो आपका ये हो जाएगा 180, B angle is 64 plus U. So your U will be equal to 180 minus 64. So your U angle will be equal to 116 आ जाएगा, which is obtuse angle. Now you will need to put this angle into this. Here you will get C, which is equal to 116 plus 22 138. This will be your C angle, which is greater than 90 but less than 180. So this is your obtuse angle. Okay, got it? Yes. Okay, now question number 8. Given that ABC and ADF and BDE are straight lines, find the value of the unknown in each of the following. Okay, अब ये आपने सॉल्व करने इसको इस तरह कर लो कि एक पेज ले आओ और पेंसिल भी ले आओ, सही है।
Okay. और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, पार्ट ए एंड पार्ट बी को। Part A, right? ओके, सो ए ए वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1.5. नहीं, ए वैल्यू इज 1.5, Yes. दिस ए एंगल। Yes. 82 plus 40 plus A equals 180. ओके, ए प्लस 40 प्लस 82 is equal to 180, right? Yes. Okay, then a plus A plus 122. yes, 122 is equal to 180. So your a will be equal to 180 minus 122, right? Oh no, I did a calculation mistake. I did 180 divided by 122. या अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर आप डिवाइड करती, बट दिस इज एडिशन। सो एडिशन को आपने सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके, जब व्हेन यू ब्रिंग दिस टुवर्ड द अदर साइड ऑफ एन इक्वल साइन। So I think that will be equal to 58. Check कर लो। Yes. Good. Okay. Okay, this angle is 52. Now find B angle. अच्छा, B भी easy है, but थोड़ा सा थोड़ा सा आपने वो पास्ट कंसेप्ट यूज़ करने जो हमने अल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो अल्टरनेट एंगल हमने पढ़े थे, और थोड़ा सा भी लेटेस्ट जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको थोड़ा सा अप्लाई कर लो। सो हाउफुली यू विल डू दैट पी एंगल। What I did was I made BDF into a triangle, and then I did A minus 180, so 58 minus 180, and then 82 minus 180, so you'll get those values. Then I did B plus whatever 82. Wait, it's hard to explain it. ओके, यू ओके, आप इस तरह कर लो, इनको सॉल्व कर लो पेज पे, ओके। देन आफ्टर दिस क्लास you will send me the picture, okay? I will check that, then in tomorrow class we will discuss that, okay? Okay. Yeah, part B को भी कर लो। Wait, I think I found the annotate option. Wait 1 minute. Okay. Never mind. It's something else. Okay. So okay, Rania, आप इस तरह कर लो कि okay, what is your answer? Let me check it through your answer. It will be wrong because I took it as 1.5. No, you took A as 1.5? Yeah. नहीं, उसको अभी ये पुट कर लो, उसकी जगह 58 वैल्यू को पुट कर लो। Okay. Okay, yes. Okay, so what is your answer? 40. But it's incomplete because there's some of B out of the triangle as well. Okay. अच्छा, Rania, what is this angle? 82. Yeah, good. So this angle, अगर इसके साथ मैं इसको ऐड कर लूँ दिस एंगल, तो ये आपका 180 कंप्लीट होगा। Oh, Yes. it's infinite. So your B will be equal to 45 plus 82. That will be your final answer, and your B will be equal to 127. If you add that two number 45 plus 82, that will be equal to 127.
ओके, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा माइन्यूट कंसेप्ट जो था वो आपने ओल्ड वाले यूज़ करने, विच इज़ दिस वन, और ये थोड़ा सा और कंसेप्ट जो था वो अभी लेटेस्ट वन, सो ये आपका थोड़ा सा अपडेटेड कंसेप्ट था। I'm done. ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी हैं। ओके, अच्छा रानिया, वैसे आगे क्वेश्चन सारे इजी हैं, वही कंसेप्ट्स हैं जो अभी हमने यूज़ किए हैं। ओके, लाइक इस ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, सो दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, आपका 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है ये एंगल, सो इस एंगल को आपने नहीं लेना, सो योर बी एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इससे आपके पास बी एंगल आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके यस, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यू विल नीड टू फाइंड ए एंगल। ओके, तो ए एंगल दैट्स विल बी इक्वल टू दी summation of this angle plus this angle। ओके, सो आपका यहाँ पे देख लो इन्होंने दो एरोज भी दिए हैं, तो इट मीन्स कि यू विल आल्सो यूज द ओल्ड कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे देख लो, तो आपका ये दीज टू लाइंस आर द पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे ये एक लाइन इसको क्रॉस कर रहा है लाइक दिस। वैसे बी एंगल तो आपके पास काफ़ी इजीली फाइंड हो जाएगा, बट ए एंगल का थोड़ा सा है, तो ये देख लो यहाँ पे। सो दिस 37, नहीं इसको नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर इफ दिस इज़ ए एंगल, सो यहाँ पे ये अल्टरनेट नहीं बन रहा, हम इस लाइन को ले लेते हैं। वो आपका अल्टरनेट एंगल बनाएगा। अब चेक कर लो किस तरह बनाते हैं। लेट्स चेक, ये आप देख लो यहाँ पे। सो योर दिस एंगल, ओके, रेड के साथ ब्लू जो रेड के साथ एंगल बना रहे हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू रेड जो ब्लू के साथ बनाएगा। ओके, सो दिस एंगल इट मीन्स के योर ए प्लस 37, दैट्स विल बी द अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस एंगल, जो कि 180 माइनस 108 है। 180 minus 108, got it? So your a plus 37 will be equal to 180 minus 108, 72, got it? आपका a एंगल क्या हो जाएगा, 72 माइनस 37, सो आपका a एंगल हो जाएगा 72 माइनस 37, 35, got it? Yes. या अच्छा, इसी तरह पार्ट बी भी है, ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो इन्हीं कंसेप्ट्स को आपने ओल्ड कंसेप्ट जो है वो सारे यूज़ करना है।